Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Abin Publishing House and Nandana, and we are doing book 7. This is your grammar book and its name is English Grammar plus Skills Unleashed Work. So children, today we are going to do chapter number 2 of your book, and the name of the chapter is Phrases and Clauses. So let's start with the chapter. A phrase is a group of words that convey incomplete sense. So अभी in the previous chapter we have learned about sentences. Sentence के बारे में पढ़ा कि group of words जिसका एक complete meaning निकलता है उसे हम sentence कहते हैं. But phrase क्या होते हैं? Group of words इन्हें भी कहते हैं. But इनका कोई भी complete sense नहीं निकलता, इनका incomplete sense निकलता है. It is a part of sentence. ये जो है sentence का एक part है. But it does not have a finite verb. लेकिन ये जो है इसके अंदर एक finite verb नहीं होता. And therefore no subject also. और इसके अंदर subject भी नहीं होता. For example, over the hilltop. Hill के ऊपर. On the holiday. Holiday. The flying swans. So here some examples of phrases are given. अब इन्हें जब हम पढ़ते हैं तो उसका कोई मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रहा. ओवर द हिल, हिल के ऊपर क्या है? ओवर द हिल. ऑन अ हॉलिडे, हॉलिडे में क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. द फ्लाइंग स्वॉन्स, क्या बताना चाहता है स्वॉन्स के बारे में? कुछ समझ में नहीं आ रहा. सो दीज आर नॉट गिविंग अस द कंप्लीट मीनिंग और द सेंस. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्रेजेस. फ्रेजेस बिकम मीनिंगफुल व्हेन दे आर जॉइंड इनटू अ सेंटेंस. सो जब इन्हें हम सेंटेंस में ज्वाइन कर देते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं? ये मीनिंगफुल बन जाते हैं. जैसे कि ओवर द हिल टॉप को हमने ज्वाइन कर दिया हिज हाउस इज सेफ. सो हिज हाउस इज ओवर द हिल टॉप. आप समझ में आ रहा है कि उसका घर कहाँ है? हिल के ऊपर. शी वेंट टू लंदन ऑन अ हॉलिडे. अब ऑन अ हॉलिडे को हमने ज्वाइन कर दिया शी वेंट टू लंदन से. सो अब हमें समझ में आ रहा है कि वो लंदन गई थी छुट्टी मनाने. द टूरिस्ट क्लिक द फोटोग्राफ ऑफ द फ्लाइंग स्वॉन्स इन द स्काई. टूरिस्ट ने उड़ते हुए स्वॉन्स की पिक खींची जो आसमान में उड़ रहे थे. तो अब हमें मीनिंग क्लियरली समझ में आ रहा है, पहले समझ में नहीं आ रहा था इन द केस ऑफ फ्रेजेस. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. फ्रेजेस आर ऑफ 5 kinds and they are noun phrases, adjective phrases, adverb phrases, prepositional phrases, and one more is there that we are going to learn. So let's start with noun phrases. क्या होते हैं noun phrases? जिसमें हम noun का use करते हैं, जो noun के बारे में बताते हैं. A noun phrase performs the function of a noun. इसका क्या काम होता है? ये noun का काम करता है, उसका function को perform करता है. And it answers the question as what. So इसके जो भी क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं आप उससे what से क्वेश्चन पूछते हैं. For example, she want to buy a new dress. What she wants to buy? क्या खरीदना चाहती है? So the answer comes a new dress. So यहाँ पे a new dress is a noun phrase. Next is adjective phrase. Adjective phrase performs the function like an adjective. Adjective की तरह ये वर्क करता है. For example, my bag is brown in color. कैसा बैग है? Brown in color. या brown is of brown color. Next is adverb phrase. An adverb phrase acts as an adverb. So ये adverb की तरह वर्क करता है. And here the example is she spoke in a sweet voice. So यहाँ पे अब जो है कैसी voice में? The answer आएगा sweet voice में. तो sweet voice is the adverb phrase here. Next is the prepositional phrase. A preposition acts as the head of the prepositional phrase. So इसमें जो है आपको preposition मिलेगा in these and it acts as the head of the prepositional phrase. For example, Rini went to the library this morning. So where she went? The answer is to the library this morning. So this is prepositional phrase. And the last one is verb phrase. So the head of the verb phrase is the main verb. So head जो इसका होता है वो होता है इसका main verb. For example, I have been reading this book since last week. So यहाँ पे what are you doing? So the answer comes reading the books
since last week. Now, it can change a phrase into a clause and vice versa. See the following table. So, here we are going to now learn about the noun phrase and the noun clause. So, noun phrase क्या होता है, noun clause क्या होता है और कैसे convert करना है, we are going to see. So, the noun phrase says he is expected to win the game. So, वो game जीत सकता है. And the noun clause says it is expected that he will win the game. तो ये ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि वो गेम जीत जाएगा. सब यहाँ पे जीत जाएगा और वो जीत सकता है. नेक्स्ट, शी होप्स टू पास द टेस्ट. वो ऐसी आशा करे कि वो टेस्ट में पास हो जाएगी. एंड शी होप्स दैट शी विल पास द टेस्ट. अब वो होप करे कि वो कर सकती है. सो हियर वी कैन सी विल इज यूज्ड. नेक्स्ट इज दे फियर टू बी चीटेड. वो चीटेड होने के लिए डर रहे हैं. And they fear that they may be cheated. वो cheated हो सकती है. So यहाँ पे जब हम clause की बात करें तो यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है और यहाँ पे ये सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा होगा. Next is adjective phrase and adjective clause. She is a girl of beauty. She is a girl who is beautiful. He wore a dress made of silk and he wore the dress which was made of silk. The child was a boy with a smiling face. The child was a boy who had a smiling face. So here we can see we have used the past form is used here. अब यहाँ पे was था, the child was happy with a smiling face. अब यहाँ पे who had a smiling face use किया गया है. Next is adverb phrase and adverb clause. So I met him at night. यहाँ पर टाइम की बात हो रही है. And I met him when it was night. तो आप देख सकते हो सेंटेंसेस को कैसे चेंज कर रखा है. फ्रेज में क्या चेंज है और क्लॉज में क्या चेंज किया गया है. They ate it at the station. उन्होंने इसे स्टेशन पे खाया. And they ate it when the station exited. So जब स्टेशन जो है चला गया. Do it at the earliest. जल्दी से कर लो. And do it as soon as you can do. He did not come because of his sickness. वो अपनी sickness की वजह से नहीं आ पाया. And he did not come because he was sick. So ये आप देख सकते हो कि दोनों sentences को जब हम पढ़ रहे हैं तो मतलब एक ही बात को कहने के दो अलग तरीके यूज किए गए हैं. He took leave for attending a marriage. And he took leave so that he could attend a marriage. तो यहाँ पे ब्रीफ कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया जब हम क्लॉज की बात करते हैं. आई कैन डू दिस विथ हिज हेल्प एंड आई कैन डू दिस इफ ही हेल्प्स मी. अगर वो मेरी हेल्प करे तो मैं ये कर सकता हूँ. So these are the clauses that we have learned. Now underline the phrase and write the type in each of the given line. So यहाँ पे phrase को हम underline करना है और उनके types को हमें इसमें लिखना है. We bought a ring made of gold. So here which type of phrase is used? So here made of gold is a phrase that is used and it is adjective phrase. ये है एक adjective phrase क्योंकि यहाँ पे gold की बात हो रही है, एक adjective की बात हो रही है. The beggar behaved in a foolish manner. So here the किस manner में बात की, beggar ने कैसे behave किया. So answer comes in a foolish manner. अब foolish क्या है? Adverb है. So this is adverb phrase and the phrase here used is in a foolish manner. So यहाँ पे in a foolish manner phrase है and adverb phrase यहाँ पे use किया गया. So children, we have done 2 and the rest is your homework you have to do on your. Now fill in the blanks by making phrase with the words given in the box below. The number of blank in each sentence indicates the number of words in each piece. So यहाँ पे children words दिए गए हैं, इन्हें आपको यहाँ पे fill करना है. The line is dash. अब यहाँ पे noun phrase को हमें use करना है. So यहाँ पे आप देख सकते हो noun कहाँ पे है और कहाँ पे verb use हो रहा है, कहाँ पे adverb है, कहाँ पे preposition है, adjective है. So इन्हें हमें यहाँ से find out करना है and then we have to write them here. So number of जितने भी blanks है उतने words यहाँ पे आएंगे. So this is your homework children. You have to do on your own. आपको यहाँ से choose करना है
and according to the given options here, bracket में जो लिखा गया है उसके according we have to fill here. And in the first one 3 words will come, second one 2 will come, and like this the words will come according to the dash given here. So children, this you have to do on your own. Now let's do clauses. What are clauses? Clauses are group of words which contain a subject and a predicate. So clauses क्या होते हैं? वो group of words होते हैं जिसमें subject भी होता है और predicate भी होता है. They form a part of the sentence. ये sentence का एक part बन जाता है. A clause contains a finite verb. Clause में finite verb होता है. Example: that my father buys will not help where she lives. Clauses are meaningful when they are joined into a sentence. So यहाँ पे जो ये clauses दिए गए हैं हमें 3, इन्हें अगर sentence में join कर दिया जाए तो एक meaningful sentence निकल आता है. I read books, English novels that my father buys. So मैं वो English novels पढ़ता हूँ जो मेरे father खरीद के लाते हैं. He says that he will not help. उसने कहा था कि वो help नहीं करेगा. I know the house where she lives. मुझे वो घर पता है जहाँ पे वो रहती है. Now the kinds of clauses. There are 2 kinds of clauses. The principal clause and the subordinate clause. So 2 तरीके के clause हैं. पहला है principal clause जिसे हम main clause भी कहते हैं, and the next one is subordinate clause. So main clause क्या होता है? वो ऐसा clause होता है which is independent, वो किसी भी sentence पे dependent नहीं है. बट जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है वो ऐसा क्लॉज होता है जिसे फर्स्ट सेंटेंस की जरूरत होती है, वो डिपेंडेंट होता है हमारे जो फर्स्ट सेंटेंस पे. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबॉर्डिनेट क्लॉज. द प्रिंसिपल क्लॉज इज अदरवाइज कॉल्ड द मेन क्लॉज एंड इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये इंडिपेंडेंट होता है, बिना किसी के हेल्प के भी ये वर्कआउट करता है. An independent clause need not depend on other clause for its complete meaning. For example is given here. I can help you. मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. So अगर आपने इतना भी पढ़ा तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, ये जो सामने पर्सन है वो मेरी हेल्प करने को कह रहा है. So अब इसको जो है किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है. That's why it is a principal clause. अब जो आगे सेंटेंस लिखा है वो लिखा है if they agree. तो इसका मतलब है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर वो लोग मान जाए. सो अगर वो लोग मान जाए, इसको हम सिर्फ अलग से लिखेंगे तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो जाएगा कौन मान जाए और क्यों मान जाए. आप ये पूछोगे कौन मानेगा और क्यों मानेगा. इफ दे एग्री, क्यों मानेंगे वो. सो दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी क्लॉज. हियर आल्सो वी कैन सी व्हेन दे कम, जब वो आते हैं. सो दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. शी विल कॉल अस, वो हमें बुलाएगी. तो वो हमें बुलाएगी, समझ में आ रहा है कि ठीक है वो हमें बुलाएगी. When they come, तो हमें इनकम्प्लीट सा लग रहा है कि कौन आएगा और कब आएगा और क्यों आएगा. So this subordinate clause is dependent on the principal clause. When they come, she will call me. जब वो आएंगे तो वो मुझे हमें बुलाएगी. So these are the 2 clauses. And in the first sentence, clause 1, I can help you is dependent, independent, and it's in its meaning. It need not depend on the second clause for its complete meaning. But the second clause, if they agree, has to depend on the first clause for its complete meaning. It is dependent clause which is otherwise called the subordinate clause. Similarly, in the second sentence, the first clause, when they come, is a subordinate clause and second clause. And she will call us is a principal clause. So अब subordinate clause is a dependent clause. Subordinate clause एक dependent clause होता है and it begins with a subordinating conjunction. ये subordinating conjunction के साथ use होते हैं such as after, before, though, although, as, because, how, if, unless, once, since, that, till, until, when, where, whether, why, etc. So these are some of the subordinating conjunctions that we can use to complete the subordinate clause. Now underline the principal clause and encircle the subordinate clause in the following sentences. So sentence दिए गए हैं, इसमें principal clause को हमें underline करना है और subordinate clause को हमें circle करना है.
So children, first one is done here. Once you reach here, you will like the place. So अभी हम जो है इन दोनों को अलग अलग करते हैं. तो पहला जो है वो लिखा है once you reach there. अगर तुम एक बार वहां पहुंच जाओ, क्या होगा अगर पहुंच जाएंगे तो this is incomplete. So that's why it is subordinate clause. जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है you will like the place. तुम्हें जगह अच्छी लगेगी. तो इसके बाद कोई कुछ पूछेगा नहीं, क्यों अच्छी लगेगी, कैसे लगेगी, कुछ नहीं पूछेगा. हाँ ठीक है, ये कहना चाहता है कि जगह अच्छी लगेगी. So this is complete. किसी की हेल्प नहीं है. So that's why it is the principal clause. Now let's come to the second one. Karan is honest though he is poor. So पहला जो है Karan is honest. ये है हमारा principal clause, क्योंकि इससे पता चला कि Karan एक honest ईमानदार इंसान है. अब जो दूसरा सेंटेंस उसके आगे जो जॉइन है उसे क्या पता चल रहा है? दो ही इज पुअर. दो ही इज पुअर से हमें क्लियर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पुअर है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि वो पुअर है. सो दिस फ्रॉम दो टू पुअर इट इज आर सबऑर्डिनेट क्लॉज. थर्ड वन आल्सो वी विल डू. द क्रिमिनल्स हैड लेफ्ट बिफोर द पुलिस रीच्ड. सो द क्रिमिनल्स हैव लेफ्ट. So criminal जो है चले गए. Before the police reached. अब यहाँ पे the criminals have left चले गए, तो ये हमारा जो principal clause है. Before the police reached ये हमारा है subordinate clause. So like this children you have to do the rest of the exercise. Now kinds of subordinate clause. Subordinate clause कौन से kinds होते हैं? There are three kinds of subordinate clause. Noun clause, adjective clause और adverb clause. क्या होते हैं? लेट्स सी. नाउन क्लॉज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन. सो नाउन क्लॉज जो है जैसे हमने फ्रेज पढ़े थे वैसे ही ये भी जो है नाउन का फंक्शन करते हैं. एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन एज व्हाट. ये क्वेश्चन को व्हाट से आंसर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही न्यू दैट द एग्जाम वुड बी डिफिकल्ट. वो जानता था कि जो एग्जाम था वो डिफिकल्ट होगा. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज. An adjective clause performs the function of an adjective and it says which person or thing is referred to. So ये जो है adjective का काम करता है और ये बताता है कि किस person या फिर thing की यहाँ पे बात हो रही है. I have posted the letter which I wrote yesterday. So मैंने यहाँ पे letter को post कर दिया जो मैंने कल लिखा था. So किस letter की बात हो रही है यहाँ पे हमें पता चल गया, वो उस letter की बात है जो उसने कल लिखा था. So this is our adjective clause. Next is adverb clause. An adverb clause performs the function of an adverb. Adverb clause जो है function perform करता है किसी भी adverb का. It tells us the time, place, manner, cause, effect, purpose and condition of an action. So ये जो है बताता है time, बताता है place, manner या फिर cause या फिर effect या फिर purpose और the condition of an action. Action की जो सारी parts है इन्हें वो बताता है. कौन बताता है? Adverb clause बताता है. He will do it when you want. तो जब तुम चाहोगे तब वो कर लेगा. तो ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है कि किस टाइम करेगा, जब तुम चाहोगे. So children, let's start with the book exercise. Complete each sentence with a suitable principal clause or subordinate clause as required. So you won't pass the examination. So यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे या तो principal clause या फिर subordinate clause को हमें इसमें insert करना है. अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट में यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट अ फुल स्टॉप. इसका मतलब दिस इज द बैक पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो इसके फ्रंट में हमें कुछ इंसर्ट करना है. सो यू वॉन्ट पास इन द एग्जामिनेशन. सो वी आर गोइंग टू गिव अस सम एडवाइस दैट स्टडी हार्ड और यू वॉन्ट पास द एग्जामिनेशन. सो इसके पहले हमें क्या लिखना है? स्टडी हार्ड और इन्फॉर्म मी और माई ब्रदर. सो again we have to insert something in the front. If you are coming then inform me or my brother. So हमने क्या लिख दिया? if you are coming. So अब यहाँ पे देखेंगे as she is too young. अब यहाँ पे कॉमा लगा है, इसका मतलब हमें कॉमा के बाद जो है कुछ भी इंसर्ट करना है. as she is too young she cannot go on the trip. So आप जो है इसके आगे जो है सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो ऐसे. So children, like we have done the 3 questions here, the rest you have to do on your own. Now fill in the blanks choosing suitable phrase from the box given below.
So here the box is given and we have to choose the phrases from here and put it here. The children are playing in the park. So first I have done, rest, do on your own. Now identify the types of clause and change into a phrase in the given sentence. So यहाँ पे हमें clause को identify करना है, कौन सा clause use हो रहा है. 3 clause हमने पढ़े थे. So which clause is being used here? या फिर हम कह सकते हैं कि subordinate clause या फिर हमारा जो primary clause था, जो main clause था वो है, and उसको जो है हमें phrase में convert करना है. The snail found a home where he could live. So the snail found a home जो है यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, तो ये हमारा प्राइमरी क्लॉज हो गया. वेयर ही कुड फाइंड होम, वेयर ही कुड लिव इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो दिस पार्ट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इट कुड बी द phrase also. So children, we have done the first and the rest is your homework you have to do on your own. Now identify and underline the type of clause. Adjective clause, noun clause और adverb clause. The following sentences. So हमें जो है identify करना है और underline करना है clause को और बताना है कि which type of clause it is. So here the man who is standing near the door is my father. So the man who is standing near the door and is my father. The man who is standing near the door, ये हमारा एक हो गया. And is my father, ये another part हो गया. So the man who is standing near the door is my father, ये है हमारा noun clause. So children, this is the first one and the rest you have to do on your own. So by this we have come to the end of this chapter and I hope that you have understood phrases and clauses in this chapter, and if you have any queries you can ask me in the comments and I'll answer your queries there. And with this we have completed this chapter and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned.